two more and then we'll start the class. Just to give me not even 2 minutes, 1 minute. Just give me 2 more minutes. Yes. Just 1 more minute. Actually, I have already framed the questions. I'm just copying into the PPT. If I don't do it now, it will just like that only. Okay. Almost done. Okay, meanwhile, okay, good evening to. Yes, okay, Saurabh sir, no problem. Just give me 1 more minute. बस लास्ट में हूँ. Yeah. Yes. Thank you for your patience. Yes, now we'll start the session. I'm sorry, मैं आपका 5 minutes मैंने आपका ले लिया है. So here we are. And please mute yourself. Okay, so that हमारा क्लास जो है वो डिस्टर्ब ना हो. Okay, I'm not muting myself. Okay. Okay.
So soils and plant mineral nutrition, this is what we were doing, as part of which we have done soil texture, soil structure, bulk density, particle density, यहाँ तक हमने किया था. आज हम लोग करने वाले हैं द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स, जो थोड़ा सा लेंदी है. मोस्टली टुडे ऑल्सो इट वोंट गेट कवर्ड, कंप्लीट नहीं होगा, हमें एक और क्लास की ज़रूरत पड़ेगी. एंड बिफोर दैट, कल जब हम लोग सॉइल टेक्सचर कर रहे थे, मैंने बताया कि देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ टेक्सचुरल एनालिसिस, राइट. उसी का मैंने आज नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपके क्वेश्चंस इन सब के लिए हो जाएगा, एमसीक्यूज के लिए, बट फॉर योर डिस्क्रिप्टिव पार्ट यू नीड टू हैव सम सॉलिड कंटेंट, राइट, फॉर विच आई हैव अगेन एडेड. एंड मोर ओवर थोड़ा सा एक और मेथड भी मिला है मुझे बुक में, तो वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है. रैपिड फील मेथड जो हमने ऑलरेडी देखा है उस टैबुलर फॉर्म में, जहाँ पे ग्रिटी नेचर, रिबन फॉर्मिंग नेचर या फिर ग्रैन्युलर नेचर, उसके बेसिस पे किस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कौन से टेक्सचुरल क्लास में है, एंड वो टेक्सचुरल क्लास कौन से ग्रुप में पड़ता है, राइट. ये हमने कल देख लिया था. नेक्स्ट आता है हाइड्रोमीटर मेथड, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, राइट, बेस्ड ऑन द स्टोक्स लॉ. जैसे मैंने बताया था, स्टोक्स लॉ का क्या है, इट स्टेट्स दैट द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्फेरिकल पार्टिकल सेटलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इन ए फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस. मैंने ये स्पेसिफिकली ये वर्ड नहीं बोला था, बट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर, ओके, ऑफ दैट पार्टिकल बेस्ड ऑन विच इट सेटल्स डाउन. एंड उसी का हम लोग at particular time intervals we measure how much it is settling down and all that, and accordingly we'll find out ki what is the टेक्सचुरल क्लास, आई मीन किस तरह का टेक्सचर है उसका, सैंडी टेक्सचर है, क्लेई स्ट्रक्चर है, एक्सेट्रा, राइट. सो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. थर्ड इसमें आता है इंटरनेशनल पिपेट मेथड, ये हमने डिस्कस नहीं किया था कल, तो वो आज एक बार देख लेंगे बिफोर गेटिंग इनटू दैट सॉइल कलर एंड ऑल दैट. See, pipette method is a standard method for particle size analysis of soils because of its accuracy. But most important thing here is the disadvantage of this is it is time consuming and cannot be employed where large number of samples have to be analyzed, क्योंकि बहुत time लगेगा. Particle size analysis is done by using sieves to separate out coarse sand from the finer particles. Okay, first this is the step. Second, the silt and clay contents are then determined by measuring the rate of settling of these two separates from the suspension in water. Again, इन दोनों को अलग से पानी में डाल के सेम ऑलमोस्ट हाइड्रोमीटर के बेसिस पे ही वो भी करेंगे, ठीक है. Now, the time required by the particles of a given size to settle can be calculated again using the Stokes law. Same law जो हमने हाइड्रोमीटर मेथड में यूज किया था. Okay, so same will be using, and based on that we'll find कितना silt and clay content है. Sand तो हमने already निकाल दिया है, ठीक है. So this is what the international pipette method is for measuring the textural analysis, ठीक है. Now next हमारा प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल आता है सॉइल कलर. नाउ सॉइल कलर देख के भी हम लोग बता सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ मिनरल्स आर प्रेजेंट, उसका किस तरह, जैसे ग्रेइश सॉइल देखते हमें लगता है ना ये एक्सक्यूज मी इतना अच्छा सॉइल नहीं है, माइट भी प्लांट ग्रोथ नहीं होगा. वही ब्लैक कलर देखते रखता है, ओके दिस इज वेरी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड दिस माई ये इसमें न्यूट्रिएंट कैपेसिटी अच्छा है, प्लांट्स कैन ग्रो वेल, राइट. दैट इज बिकॉज ऑफ the color that indicates what are the minerals that are present or what is the composition of the soil, not completely but at least basic details based on if we can understand कि किस तरह का soil है and उसका impact किस तरह से रहेगा plant growth पे. So soil colors are used to infer pedogenic processes in soil, किस तरह से वो soil formation हुआ है. The main pigmenting coloring agent in soils are organic matter, iron and to a lesser extent manganese. When these agents are not covering the mineral grains, the natural color of the grains is visible and most mineral grains are naturally gray. Very, very important. Okay. जो मिनरल ग्रेन्स का मतलब क्या है, सॉइल मिनरल्स क्या होते हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, राइट, वो नेचुरली ग्रे होते हैं. द चेंज ऑफ सॉइल कलर विद डेप्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वेराइटी ऑफ प्रोसेसेस दैट आर अकरिंग इन द सॉइल, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ the presence of organic matter, the presence of various other mineral elements that are present. Okay, now the top
soil is usually darker than the lower layers. Reason again organic matter accumulation. सबसे ऊपर लेयर हमने देखा था ना horizon O, which is horizon O सभी soils में नहीं होगा. जहाँ पे organic matter addition बहुत ज्यादा है वहाँ पे visible horizon O layer होगा. Otherwise generally horizon O layer होता नहीं है in regular soils. The soil color does not affect the behavior of the soil but provides insights into the environmental conditions, formation process and other influences on the soil. Now this characteristic point is used in classifying the soil. Okay, it will provide us कि किस तरह के conditions में वो soil form हुआ है. Now black generally we know that there is organic matter in that. Red color iron and aluminum oxides. White होगा तो silicates and salt that are present. Now when we talk about this soil color, मुंसिल ने हमें एक चार्ट दिया है. Okay, मुंसिल एक soil scientist है. He gave this soil color system and this color is expressed, soil color is expressed in terms of three features. 1 hue, 2 value, 3 chroma. As you can see here, hue is the basic color. जो इसका basic color होता है, it consists of the rainbow colors जो विबजीआर होते हैं. So the hue is written on the top right corner of the chart. जो भी यहाँ पे जो चाल देख रहे हैं ना, ये मुंसिल color system chart ही है. Hue यहाँ पे top right system इस पे corner पे लिखा जाता है. Second is value. Now what is value? It is, as you can see here, कितना light है या कितना dark है वो color. So lightness or darkness of this color will be visible here in this value. Now value कहाँ पे? Left side पे लिखा जाएगा. So here the values are written on the left hand side and the color becomes lighter as we move upward, as you can see here. ये darker है, as we move up it is becoming lighter in color. ठीक है, ये हो गया value. थर्ड आता है क्रोमा. क्रोमा मतलब हर जगह पे जो इंटेंसिटी है, विथ व्हाट इंटेंसिटी द कलर इज, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ बेसिक ह्यू और वी कैन कॉल इट एज द रिलेटिव प्यूरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ दैट स्पेक्ट्रल कलर. मतलब कितने इंटेंसिटी के साथ वो है. जैसे जनरली जब विजिबल लाइट पड़ता है green color है, it means it is absorbing all other colors of the visible light and only it is emitting the green color, it is reflecting the green color, that's why we are able to see it as green color, right? वो किस intensity के साथ उसको reflect कर रहा है, that will form its chroma. ठीक है, so the chroma is written at the bottom, as you can see here, color intensity or its purity and increases towards the right hand side. जैसे आप जा रहे हो right hand side chroma. The combination of these variables is used to describe the color of a soil, which is called as Munsell notation. And the Munsell color notations are systematic, numerical with letter designations of each of these three variables. जब भी Munsell notation होता है उसमें soil hue, soil value, soil chroma सब कुछ रहता है soil color का. So all these would be there. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे मैंने. द न्यूमेरिकल नोटेशन 2.5 YR 5/6 सजेस्ट ह्यू ऑफ 2.5 YR. सो उसका ह्यू है बेसिक कलर 2.5, वैल्यू ऑफ 5, क्रोमा ऑफ 6. ओके, सो एज यू कैन सी हियर 6 में जो यहाँ पे जो कलर आ रहा है 2.5 IR, that would be red in color. So here the equivalent of parallel soil color named for the Munsell notation here in this case is red. ठीक है, so this is very very important and these are the characteristics or features of the soil with certain colors. जैसे कि yellow to yellowish brown है कोई soil color. So generally we can see that these soils often have poorer drainage than red soils and generally ये laterite soils के तरफ इशारा कर रहे हैं यहाँ पे. Okay, the iron compounds in these soils are in hydrated form and therefore do not produce that rusty color. वो rusty color नहीं होगा because they're in hydrated form. Okay. So next, red color. This color indicates good drainage. Iron found within the soil is oxidized more easily due to higher oxygen content. This causes the soil to develop a rusty color. The color can be darker due to organic matter. अगर organic matter था तो dark भी रहेगा. Black. These soils are often associated with high levels of organic matter. So likewise, हर
कई सर कुछ कलर्स का यहाँ पे एक टेबल मुझे मिला था किसी एक बुक में, तो वो मैंने यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया है फॉर योर कंफर्ट। तो एक बार प्लीज आप बाद में इसको देख लीजिए, देयर इज नथिंग मच टू एक्सप्लेन, सो आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू दिस टेबल, बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर उसके बाद भी कुछ डाउट्स आए तो यू कैन ऑलवेज कम बैक टू मी। ये हमने ऑलरेडी कर लिया है सॉइल प्रॉपर्टीज में कैटआयन एक्सचेंज कैपेसिटी। जब हमने देखा था न्यूट्रिएंट एक्सचेंज किस तरह से होता है, कैटआयंस का किस तरह से एक्सचेंज होता है एंड एनियंस का किस तरह से एक्सचेंज होता है। ओके, एंड वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स इज इट्स कैटआयन एक्सचेंज कैपेसिटी, कितना कैपेसिटी है उसका कैटआयंस एक्सचेंज करने का। okay, same whatever that I have given in the class, the same is here again for your comfort. Next comes is pore space. Now pore space is the volume of soil not occupied by soil particles, which is occupied by air or water or both. Okay, pore space में तो सब कुछ वो रहता है, इधर soil, water, soil, air, etc. right? Now plant root exists and grow in pore space. It directly controls the amount of water and air in the soil, indirectly controls the plant growth and crop production obviously. Okay, ऐसा नहीं है कि उसका इंपॉर्टेंस नहीं, इट इज बिकॉज अगर रूट्स हेल्दी रहेंगे तब जाके उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्शन पे, देयर बाय if not directly, indirectly it has a definite impact. And the amount of pore space depends on particle size, texture, structure and biological activity of that particular place. Now clay soils have less macropores compared to sandy soils, but it has more micropores. Okay, so the total pore space is 50 to 60% in clayey soils, 30 to 50% in loamy soils and 20 to 30% in sandy soils. ये हमने डिस्कस कर लिया है earlier, right? नेक्स्ट आता है सैंडी सॉइल्स कंटेन क्लोज टू sandy soils contain 25,000 pores per meter square and clay soils contain 25 million pores per meter square because okay, because of this as we can see here, यहाँ पे जो 50 to 60% pore space है, that is because of this small pores जो 25 मिलियन पोर्स रह सकते हैं पर मीटर स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको भी बोल्ड करके रखा है। एंड एडिशन ऑफ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन पोर स्पेस, द एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर increases the pore space because ऑर्गेनिक मैटर जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो उसके माइक्रोपोर्स ज्यादा रहेंगे उसमें एंड उन्हीं की वजह से the water holding capacity also increases. Okay, now coming to the types of pores, Clothier ने 2008 में classification दिया है related to the pores in the soil. Based on it there are 5 major categories. Macropores diameter 75 to 5000 micrometers का size है. Mesopores diameter 30 to 75 micrometers. Macropores जिसमें सबसे ज़्यादा air रहेगा. माइक्रोपोर्स डायमीटर 5 to 30 माइक्रोमीटर, इसमें सबसे ज्यादा वाटर रहेगा. अल्ट्रा माइक्रोपोर्स डायमीटर 0.5 to 5 माइक्रोमीटर्स एंड क्रिप्टोपोर्स डायमीटर लेस देन 0.1 माइक्रोमीटर्स. जनरली इसमें वाटर ही रहता है लेकिन वो भी ना के बराबर, दैट कांट बी टेकन अप बाय द प्लांट्स. मेनली प्लांट्स के लिए द माइक्रोपोर्स वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं कि मैक्रोपोर्स इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे बिकॉज दे नीड एयर, राइट. नाउ पोर स्पेस के बेसिस पे सॉइल मॉइस्चर एंड सॉइल एयर ये सब रहता है, अलॉन्ग विद दैट सॉइल टेम्परेचर एज वेल, किस तरह से मैनेज हो रहा है सॉइल में. सो उसका थोड़ा सा कंटेंट मैंने यहाँ पे ऐड किया है, वॉट एवर दैट इज रेलिवेंट. सो हियर when we talk about soil moisture, हमने ऑलरेडी सॉइल मॉइस्चर का देख लिया है कि सैचुरेशन में किस तरह से रहता है एंड फील्ड कैपेसिटी में किस तरह से रहता है एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे किस तरह से रहता है एंड टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर वो भी हमने देख लिया है, डेफिक वाटर वो भी हमने देख लिया, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड ऑल दैट, राइट. सो वो फिर मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रही हूँ. हियर विल बी लुकिंग इनटू द मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर. ठीक है.
Now, there are different methods for measuring the soil moisture, and the first one of that is a gravimetric method. जहाँ पे भी photos मुझे मिले हैं, I have put, otherwise जहाँ पे नहीं मिले, I couldn't get the photographs. So yes, little bit boring I can say, and थोड़ा सा bland दिखेगा आपको. So here when we talk about gravimetric, this is the most simplest and most widely used method for determining the soil moisture. This consists of obtaining a moist sample, drying it in oven at 105 degrees centigrade until it loses no more weight, and then determining the percentage of moisture. So इससे क्या होगा, इससे पहले वो weigh करेंगे, okay, for example 100 grams है, ओके, आफ्टर ड्राइंग इट एंड सीइंग दैट उसके वेट पे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, नो लॉस ऑफ वेट होना नहीं चाहिए, टिल दैट टाइम दे विल डू, ओके. एंड उसके बाद जो भी वेट आएगा, फॉर एग्जाम्पल 95 ग्राम्स आएगा, इसका मतलब है 5 ग्राम्स का उसका मॉइस्चर रहा. So the gravimetric method is time consuming and involves laborious process of sampling, weighing, drying in the laboratory. टाइम लगेगा क्योंकि, और हर बार हमें we know that 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो कर सकते हैं, but for how much time and all that they have to keep doing it so that बिल्कुल वेट का डिफरेंस नहीं आना चाहिए. ओके, मतलब जहाँ पे उसका खुद का वेट लूज नहीं होना चाहिए. सो दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दैट केस. सो दिस इज इजिएस्ट बट ऑल्सो वेरी लेबोरियस. नेक्स्ट मेथड आता है हमारा टेंशियोमीटर. ओके, ना वाटर टेंशन के बेसिस पे, दैट इज सॉइल सक्शन, किस तरह से बेस्ड ऑन दैट दे use that method to understand the moisture level in the soil. Now, for measuring the tension of the water in the soil, the most widely used instrument is a tensiometer. Now, this is the tensiometer. ठीक है, यहाँ से porous tip है, okay, and the soil sucks water out of the tensiometer. ठीक है, सॉइल कितना तेजी से वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम दिस टेंशियोमीटर, क्योंकि इसमें वाटर हम लोग मेजर रखते हैं. ओके, and this will allow the soil to take, the higher it takes, that means उसमें soil water कम है. So here the tensiometer essentially consists of a porous ceramic cup connected through a tube to a manometer, that is nothing but the vacuum gauge, and with all parts filled with water. The cup is positioned in the soil where information regarding the soil water is desired. जिस एरिया में और जिस सॉइल में हमें चाहिए कि सॉइल मॉइस्चर कितना है वो पता करना है, वहां पे this is a soil surface and they'll put that into this water, as you can see here, real इसमें. So indexing soil suction value for evaluating soil water relation recognizes the soil water is a dynamic system, and that is it moves. ओके, जहाँ पे ज्यादा है वहां से फ्रॉम हायर gradient to lower gradient. So water moves into and out of the soil because of energy differences between the systems. So the tensiometer may not respond to the changes in the soil section as fast as they occur. Immediately नहीं दिखेंगे, मतलब वहां पानी जा रहा है लेकिन यहाँ पे हमें रीडिंग नहीं मिल रहा, because it will take some time. Though its readings at different locations in soil may be interpreted in terms of direction and intensity of the water flux. That is how much, by what intensity the water is moving out of this pipe or this tube into the soil, और कितने तेजी से water ले रहा है actually the soil. So tensiometer is used to obtain energy status of the water in the soil directly and water content indirectly, assuming that the former is in equilibrium with the water. So first हम लोग ये assumption लेते हैं कि जिस टाइम पे हम लोग टेंशियोमीटर इंसर्ट कर रहे हैं वाटर में, at that time the energy status of water in the soil and the water content in the tube are same. ये assume करके ही हम लोग उसको insert करते हैं. As the water content of the soil surrounding the water-filled porous cup decreases, the energy level of the soil water decreases relative to that of the water in the tensiometer cup, because of which the water moves out of the tensiometer through the pores into the soil. Now the pressure of water in the tensiometer is reduced, since the water is being absorbed by the soil through this porous ceramic cup. If the soil surrounding the porous cup receives additional water, the soil water pressure is increased and the water flows through the walls of the porous cup into the tensiometer.
ओके अगर नहीं है तो मतलब यहाँ पे पानी ज्यादा है, तो इनफैक्ट ये पानी इसमें एंटर होने के चांसेस है। अगर यहाँ पे what you'll say the energy level or the gradient is higher here. Okay, so the tension or suction reading on the tensiometer is related to water, soil water content with the help of a calibration curve called as soil moisture characteristic curve. So यहाँ पे जो भी reading आएगा okay tensiometer में, based on that they already have a curve. ओके सो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज रहेंगे अकॉर्डिंगली दे से दैट दिस इज व्हाट द soil moisture of this particular soil. Okay, so here that curve that we use generally for this purpose is the soil moisture characteristic curve. Very very important. Okay, so इस तरह से होगा and based on that they'll know, based on this tension they'll know that how much water is present in that soil. Okay, now third method है electric resistance block method. इसमें दो टाइप्स का है based on which the water moisture content can be gauged. And here Boykos and Mick in 1940 proposed that electrodes to be placed in a block of porous material which in turn is placed in the soil. So electrodes इसमें रखे हैं and this would be placed in the soil based on the electric resistance they'll be able to, उसके basis पे यहाँ पे उनको reading मिलेगा. ठीक है, the water content in the block changes with corresponding changes in the water content in the soil, and changes within the block are reflected by changes in the resistance between the electrodes. So उनका difference जो भी रहेगा that would give the water, the amount of water. So plaster of Paris or gypsum, glass fiber, ceramic and nylon cloth can be used as a porous material of electrical resistance units, and these are used for indirect measurement of soil moisture in situ. So ये again indirect method है, direct method नहीं है. And there are two methods based on which this can be done. One is the gypsum block for measuring resistance. ये है, this is the gypsum block that is being used to measure the resistance based on which the difference between that already जो moisture है and the moisture in the soil, based on that the differential resistance यहाँ पे वो reflect होगा. Okay, and the other is blocks installed at different depths. ऐसे different depths पे blocks install करके they'll take the readings and accordingly they arrive at the soil moisture content. So it works on the principle of conductance of electricity. किस तरह से electricity conduct हो रहा है. Flow of electric current between the electrodes embedded in a porous block kept in intimate contact with the soil is a function of soil water content. So it is one of the factors of soil water content. Okay, moisture रहेगा तो ही electricity conducting होगा, right? So based on that principle, so जितना water रहेगा उतना electricity conduct होगा. So that they will take the difference and accordingly they arrive at that moisture. So the resistance to flow of electric current in the block is inversely proportional to the moisture content. Okay, thus when the block is wet, conductivity would be high and resistance is low and vice versa. Obviously, जहां पे भी wet है, electrical conductivity would be high. Okay, and जहां पे मॉइस्चर कम है वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विड बी लो. सो जहां पे भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई है मतलब रेजिस्टेंस वुड बी लो. ओके, एंड जहां पे भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो है मतलब वहां पे रेजिस्टेंस वुड बी हाई. So the actual resistance reading of the block varies with the type of electrodes, their length and the distance between them, and the matrix material, its density and temperature. Keeping all these in view, they'll arrive at the values based on the readings that they get at different depths. So the resistance blocks read low resistance at field capacity. So based on the reading, अगर low resistance आया है मतलब that is at field capacity, मतलब there is ample water in that soil, and high resistance at wilting point, इसका मतलब पानी बिल्कुल नहीं है. वही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखेंगे तो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब फील्ड कैपेसिटी, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब विल्टिंग पॉइंट. ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों ही है, रेजिस्टेंस मेजर करने वाला एंड वी आर यूजिंग इलेक्ट्रोड्स फॉर कंडक्टिंग, फॉर मेजरिंग द
conduction of electricity. So ये gypsum block है, this will focus on the resistance part, and these focus on the electrical conductivity part. Okay, though I know little bit क्या बोलते हैं टेक्निकल है, बट आई हैव ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल. जो मेन पॉइंट्स मैंने जो बताया है उस पर बस ज़्यादा फोकस कीजिए, दिस वन. ओके, now next method is neutron scattering method. Now this is one of the most rapid and indirect method of measuring soil water content, that is of neutron scattering. In this method, number of hydrogen nuclei present per unit volume of soil is measured. So नंबर ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस से उनको समझ में आया कि कितना वाटर हो सकता है इसमें. ओके, बिकॉज H2O वाटर का फॉर्मूला H2 है ना, सो 2H+ आयॉन्स है यहाँ पे. Fast moving neutrons emitted from a radioactive source using radium, beryllium or americium और beryllium दोनों का combination use करके, when they collide with particles having mass nearly equal to their own, because these specifically, why only these we are selecting, because their mass is close to or equal to hydrogen atom in the soil. So when they make the collide these particles with the hydrogen ions, release their energy and are thermalized or slowed down. Okay, एक बार collision हुआ तो they'll slow down the neutrons. So here the slowed down neutrons are detected by a detector and recorded on a scaler. So commonly used detector of slowed down neutron is a tube containing BF3 gas. It's a kind of gas that will help them understand, okay, कितना स्लो न्यूट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन्स स्लो डाउन हुए हैं. सो बेस्ड ऑन द स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स, ओके, सो इतने न्यूट्रॉन स्लो डाउन हुए मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल्स के H+ आयॉन्स के साथ दे हैव बीन हिट. Okay, that's why their speed has come down. So based on that, they'll say that, okay, this is the amount of water. More the neutrons are slowed down, higher will be the water content in the soil. Okay, the same thing that I have mentioned. The zone of influence is generally 15 to 20 centimeters around the detector. So detector के 15 to 20 centimeters around में ही वो ये measure कर पाएंगे. But that would be most rapid. बट इनडायरेक्ट मेथड अगेन डायरेक्ट मेथड नहीं है, बिकॉज उनके जो आयन से किस तरह से कोलाइड हो रहे हैं न्यूट्रॉन्स, किस तरह से उनका स्पीड कम हो रहा है, उस स्पीड के बेसिस पे, उस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बेसिस पे दे आर कमिंग अप विद द वैल्यूज. उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रेशर प्लेट apparatus. नाउ प्रेशर प्लेट्स आर यूज टू अप्लाई मेट्रिक पोटेंशियल्स फ्रॉम -10 to -15 किलो pascals, दैट इज -0.1 to -15 bars. ये प्रेशर है. बेस्ड ऑन दैट प्रेशर, दैट इज दे कैन व्यू, दे विल से दैट ओके इतना मॉइस्चर है. An external source of compressed air is used to push water out of an initially saturated soil sample kept in pressure plate or membrane apparatus. So जो भी उसमें water है that has to be taken out. So compressed air is used to push water out of that soil. The pressure applied within the container decreases the metric potential of water in the plate. So जब होगा, जब when they try to air, put air or use air to push water out of that, the metric potential of the water decreases. Under the influence of the applied pressure, external pressure जो भी वो apply कर रहे हैं, water held by the soil is forced out until the equilibrium is attained between the applied pressure and the force binding the water to the soil, that is which is called as metric suction. Okay. Now, field capacity and permanent wilting point can also be determined in the laboratory with this equipment using applied pressure of 0.33 bars for clay soils and 0.1 to 0.2 bars for sandy soils and 15 bars respectively. Okay. That is for clayey and sandy soils. And this is important. As far as possible, undisturbed cores should be used for laboratory determination of field capacity and permanent. Okay. For disturbed samples, soil should be air dried, pulverized, and passed through 2 mmC. See again,
जितना हो सकता है उतना अनडिस्टर्ब्ड सॉइल को लेके हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, देन इट वुड गिव अस द राइट रिजल्ट्स. अदरवाइज डिस्टर्ब्ड सॉइल्स है, सो देन फर्स्ट दे हैव टू बी एयर ड्राइड, पल्वराइज्ड, मतलब बिल्कुल क्रम्बली नेचर तक लेके आना है, देन पास देम थ्रू टू एमएमसी, देन दे हैव टू बी यूज्ड अंडर दिस. फिर उसको सैचुरेट करना है एंड देन पुट इट अंडर दिस, ओनली देन सही इंफॉर्मेशन मिलेगा हमें. ओके, सो हियर जो दिस इज इंपॉर्टेंट, फील्ड कैपेसिटी कितना होता है ऑन अप्लाइंग प्रेशर, एंड फॉर क्लेई सॉइल्स एंड फॉर सैंडी सॉइल्स दिस वुड बी इंपॉर्टेंट. एंड और कुछ है इसमें. नेक्स्ट आता है हमारा टाइम डोमेन रिफ्लेक्टरी मेथड. अगेन ये सारे नए मेथड्स है जो यूज होते हैं सॉइल मॉइस्चर कंटेंट measurement. Now, time domain reflectory is the latest method of measuring soil water contents. It makes use of the unique electrical properties of water molecule to determine the water content in the soil. Again, water का जो electrical properties, electrical conductivity and all that, they'll use that here. So the speed with which an electromagnetic pulse of energy travels down a parallel transmission line depends on the dielectric constant Ka of the material in contact with the surrounding the transmission line. So here again based on the water molecules का जो unique electrical properties है, so here they'll send an electromagnetic pulse of energy. Okay, and how that travels, that depends on the amount of water that is present in that soil. So here higher the dielectric constant, slower is the speed. Okay, so here soil is composed in general of air, mineral and organic particles and water. The dielectrical constants for these materials are 1, 2 to 4 and 80. So highest would be of 80 जो water का है. Because of this great difference in the dielectric constant of water from other constituents, the speed of travel of a microwave pulse of energy in a parallel transmission line buried in the soil is very much dependent on the water content of the soil. So, jitna speed, okay, वो जाता है, that is dependent on the amount of soil that is present in the amount of water that is present in the soil. So here when soil is completely dry, Ka will be 2 to 4 only. Okay, if volumetric wetness is 25%, Ka will be approximately 11 to 12. That is जितना soil में अगर 25% water है, इसका मतलब 11 to 12 Ka होगा. वही 80 है मतलब कंप्लीट प्योर वाटर, पूरा वाटर में ही है. Okay, so for agricultural soils the value of Ka depends primarily on the volumetric water content of the soil and is largely independent of the type of soil. किस टाइप का soil है वो, that it won't consider, it only considers the amount of water in that based on the dielectric constant, that is Ka, and it should be अगर 25% अगर वेटनेस है, मॉइस्चर है उस सॉइल में, सो उसका Ka विल बी अप्रोक्सीमेटली 11. सो ये जैसे जैसे इंक्रीज होगा दिस ऑल्सो विल बी इंक्रीजिंग. ये प्योर वाटर का दिया है यहाँ पे, डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस कि 80 तक जाएगा. ओके, now again उसी का दिया है. When a microwave pulse travels down transmission line, it behaves in many ways like a beam of light. Beam of light किससे, they travel in straight lines. At radio frequencies, the dielectric constant of water is about 80. Most of the other solid components of soil have dielectric constants ranging from 2 to 7 and that of air is effectively 1 क्योंकि उसमें water है ही नहीं, moisture जहाँ पे नहीं है, dielectric constant almost 0. So thus a measure of the dielectric constant of water is a good measure of the water content in the soil. ये बहुत easy भी है actually. The TDR technique measures the transit time of microwave pulse in frequency range of 1 megahertz to 1 gigahertz launched along a parallel wave guide of the known distance. उनको already known distance है कितने depth तक है and all that, and accordingly they release that, transmit that microwave pulse. So the apparent dielectric constant Ka of the air soil water complex can then be determined by this formula. Ka is equal to Ct by 12 whole square. So here where L is the length of the wavelength in centimeters,
T is the transit time in nanoseconds, which is a billionth of a second. And C is the speed of light in centimeters per nanosecond. Okay, so based on that, they'll be able to get the Ka. So here the transit time is defined as a time required for the pulse to travel in one direction from the start of the waveguide to the end of the waveguide. Okay, so ये हो गया हमारा टाइम डोमेन रिफ्लेक्टर मेथड. मेजरली यहाँ पे आपको क्या याद रखना पड़ेगा? वन थिंग, द के वैल्यूज ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ सॉइल्स, व्हाट इज हाउ द के का फॉर्मूला क्या है, एंड दीज वैल्यूज किस तरह के सॉइल्स एंड सॉइल इसमें किस तरह का कांस्टेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा. ओके, ये हो गया हमारा सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट एंड ऑल दैट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पोर स्पेस, इट इज सॉइल एयर. ठीक है, सॉइल एयर का भी हमने बेसिक कंटेंट ऑलरेडी देख लिया है, हाउ एग्जैक्टली इट इम्पैक्ट्स द ग्रोथ एंड ऑल दैट. अभी थोड़ा सा और इन डेप्थ देख लेंगे. सो हियर सॉइल एटमॉस्फेयर इज अ गैसियस फेज ऑफ द सॉइल. द सॉइल एयर, सॉइल एटमॉस्फेयर मतलब इट इज अ गैसियस फेज ऑफ द सॉइल. जैसे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर रहता है, उसी तरह से सॉइल एटमॉस्फेयर, दैट गैसियस फेज ऑफ द सॉइल इज एयर. Soil air occupies the pores which are not occupied by the liquid, and soil air is a continuation of the atmospheric air. ऐसा नहीं कि इसका बिल्कुल अलग है, ऊपर से जो सॉइल के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसी का कंटिन्यूएशन रहेगा सॉइल एयर भी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. It is in constant motion from the soil pores into the atmosphere and from the atmosphere into the soil pores. So इसी की वजह से gaseous जो combination है वो change होता रहता है soil air में भी. So the exchange of gases between the soil pore spaces and atmospheric air is known as soil aeration. उसी को हम लोग बोलते हैं सही से soil aeration होना चाहिए, otherwise the plants will not be able to grow properly, they'll not be able to establish themselves properly, right? Soil aeration is essential for the respiration and survival of the soil organisms as well as plant roots. This process controls the deficiency of oxygen consumed during the respiration of plant roots and soil microorganisms, and prevents the toxicity of carbon dioxide evolved during the respiration in the soil air. So, we understood why soil aeration is very, very important. क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, दैट आल्सो हैज टू बी एक्सपेल्ड and oxygen has to be increased. How that will happen? Because of the soil aeration only. अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो क्या होगा? It might react with the present water and carbonic acid form हो सकता है, thereby acidity increase हो सकता है. Though to a particular level this acidity is important for the maintenance of the fertility of the soil, but otherwise ज्यादा हो गया मतलब that will have a negative impact on the soil. Okay, now composition of soil air, if you look at it, soil air contains gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor and others. As you can see here, percentage by volume, soil air atmospheric, soil air में nitrogen इतना रहता 79.1, oxygen 20.6, carbon dioxide 0.25. वही atmospheric air में 79, 20.79 and 0.03. ओके इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहता है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कॉम्पैक्ट एरिया, उसी में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द ब्रीदिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द रूट्स एक्सेट्रा. The composition of soil air is different from the atmospheric air, which is quite evident from the table that we have already seen. Soil air contains more carbon dioxide and less oxygen than atmospheric air. That also is quite visible. बहुत कम डिफरेंस है, बट स्टिल वाई कम डिफरेंस है? बिकॉज कंटिन्यूटी फ्लो है हमारा एरेशन की वजह से, सॉइल एरेशन की वजह से. इट ऑल्सो कंटेन्स मोर वाटर वेपर दैन एटमॉस्फेरिक एयर. The nitrogen content of air is almost equal to atmospheric air. Nitrogen content similar रहेगा, but others it will keep on changing. Now, what is air capacity? This term is used to describe the aeration status of soil. The air capacity refers to the volume of pore space filled with air when the soil is under a tension of 50 millibar. Okay, and the aeration capacity can be characterized in three ways. One, its oxygen diffusion rate. Two, its oxidation reduction potential. And three, its redox potential.
Yes, this is EH. No, redox. Yeah. Okay. So first, oxygen diffusion rate. What is this? Now it is the best and most reliable measurement of aeration capacity. That is, कितना aeration status किस तरह से है. It determines the rate at which oxygen in soil air is replenished. ओके, किस तरह से वो एरेट होके सॉइल जो ऑक्सीजन किस तरह से रिप्लेनिश हो रहा है इन द सॉइल एयर. एंड ओडीआर डिक्रीजेस विथ सॉइल डेप्थ. व्हाई? because the break, continuity of atmospheric air to the soil air will slow down as the depth of the soil increases. breakdown ho jata hai, because of which ODR decreases with soil depth. Very important. ODR should be above 40 into 10 to the power of minus 8 gram per centimeter square per minute for good growth of most of the crops. Very, very important. However, the root growth is drastically reduced when ODR decreases to about 20 into 10 to the power of minus 8 grams per centimeter square per minute. इतना आया मतलब root growth is drastically affected. Why? This denotes that there is less oxygen in the soil. And less oxygen matlab moisture बहुत ज़्यादा है. That must be heavy soils or waterlogged conditions. Okay, in such cases, this is the condition. Oxidation reduction potential of soil. Now, it is an important chemical characteristic of soil related to soil aeration, because that is the one that is characterized by this, right? It indicates the oxidation and reduction states of soil system. So, in simpler terms, in oxidized soil, ferric ions, manganic, that is Mn4 plus, nitrate ions and sulfate ions dominate. Okay, and in reduced soil, ferrous, manganese, these are not much available, these are available. So more oxygen जब रहता है, so these would be available. And oxygen कम रहता है तो they will be reduced into these forms which are not available. So the redox potential is measured using platinum electrodes and expressed in millivolts. So a positive EH value indicate oxidized state and negative EH value indicate reduced state. So ये हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस. सो कई सारे तो मैंने हाईलाइट कर दिया है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट कम्स इज अ सॉइल पीएच. मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू डू यस्टरडेज कंटेंट के बेसिस पे. Now, when we talk about soil pH, it is nothing but the negative logarithm of H plus ions activity in the soil, which is called pH, which indicates its acidity or the alkalinity. And based on the various values, we can describe soils: acidic soils, alkaline soils, saline soils and all that. वो कल हम लोग करेंगे. Now this pH, soil pH is very, very important because it influences the nutrient availability, soil physical condition and the plant growth. And every plant has its own soil pH requirements, as you can see here. This is average I have given. जैसे rice है 4 to 6, wheat है 6 to 7.5, या potato है 5 to 5.5, tea है 4 to 6. ओके, और भी है वो हम लोग आगे कल जब करेंगे ना, हाउ factors that affect the soil pH and all that. In that we'll see. And also problematic soils based on salinity, based on pH, and these are the kind of crops that can be grown under various pH ranges. Especially ये एसिडिक सॉइल्स में ये सारे ग्रो कर सकते हैं. ओके, एसिडिक सॉइल्स में सबसे ज़्यादा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं हम. एंड दिस अ मैनेजमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल्स, सैलिन सॉइल्स, अल्कलाइन सॉइल्स, रिक्लेमेशन किस तरह से करेंगे, एमेलियोरेशन मेथड्स क्या है. दीज आर द मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन अरुणाचल प्रदेश. सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, अगेन लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है हमारा. ओके, वो भी इम्पॉर्टेंट है बहुत. एंड देन ये उसी का. देन सॉइल सर्वे है, किस तरह से सॉइल सर्वे, पर्पस क्या है, टाइप्स क्या है, why we do, and what is the use of that methodology, all that we'll be doing. Okay, kal mostly I'll try to wind this up. थोड़ा सा लेंदी है. Now these are the questions. I expect you all to
पार्टिसिपेट इन दिस? ओके, यस। जैसे मैंने बताया है, ये बेस्ड ऑन द कल वाला जो कंटेंट हमने किया था ना, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। So broad bed furrow system are primarily used in which type of soil to improve drainage and prevent waterlogging? Yes, ये हमने देखा था ब्रॉड बेड फरोस, फोटोज भी दिखाया था मैंने। इस तरह से रहता है, ओके, 1.5 meters distance. So this broad bed, this is majorly to improve the drainage. जो भी water, that all would be accumulated here so that there won't be any waterlogging conditions. Thereby, plants can grow freely, properly, without waterlogging conditions. Yes, गलत भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं. आई सजेस्ट यू ऑल टू पार्टिसिपेट इन दिस. एक्चुअली गलत हुआ तो ज्यादा आपको याद रहेगा कि हाँ उस दिन गलत किया है, एग्जाम में आया तो आप पक्का करेक्ट आंसर करोगे. ओके, सो हियर यस इट इज ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल्स में बीबीएफ, दैट इज ब्रॉड बेड फरोज, बहुत ज्यादा यूजफुल रहते हैं. ओके, और यहाँ पे आंसर, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉन्टूर बंडिंग इज इनकरेक्ट. यहाँ पे आंसर दिख रहा है. ओके, ये आप करते रहिए, ऑप्शंस देख के मैं नॉर्मल पीपीटी में जाके एक बार चेक कर लेती हूँ इसी में है या फिर बाकी सब में भी. हम्म, चलिए एक ही इसमें है. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉन्टूर बंडिंग इज इनकरेक्ट? सी तो है ही. इट हेल्प्स इन इंटरसेप्टिंग रन ऑफ एंड कंट्रोलिंग इट्स वेलोसिटी ऑन स्लोपिंग लैंड्स. वेरी मच ट्रू. ये it can be adopted in light and medium textured soils. Yes, this is more useful in these kind of soils only. It is effective only on slopes greater than 10%. No, actually less than 6% के आसपास. It helps in retaining moisture in the field. Yes, surplus arrangements are provided whenever necessary. That is, अगर स्लोप ज्यादा है या फिर हेवी टेक्सचर्ड सॉइल्स है या फिर हेवी रेनफॉल है, इन दैट केस कॉन्टूर बंडिंग कैन बी क्लब्ड विथ अदर मेजर्स सो दैट उसका जो बेनिफिट्स है वो हम लोग अवेल कर सके. दैट इज सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का. ठीक है, नेक्स्ट, which of the following bunding options is most suitable for black soils with an annual rainfall of less than 750 mm and slope of up to 1%? ये हमने क्लियरली, जब हम लोग ये टाइप बंडिंग ऑप्शंस देख रहे थे, उसमें क्लियरली देखा गया था वेर एवर द रेनफॉल इज लेस एंड स्लोप इज ऑफ अप टू 1%, this kind of bunding option would be best for soil and water conservation. Yes. सी ब्रॉड बेड फरो सिस्टम वहां पे यूजफुल है जहां पे हेवी रेनफॉल्स है एंड देन sticky soil, that is black soils है. So here in this case it is compartmental bunding. compartmental bunding में ये बहुत यूजफुल रहता है. ठीक है, वेयर स्लोप बहुत कम है यहाँ पे. वही ग्रेडेड बंडिंग, कॉन्टूर बंडिंग, बेंच टेरेसिंग, ये सब हाई स्लोप्स में यूज है. ओके, सो लेकिन ब्रॉड बेड फरो दो इट इज यूजफुल जहाँ पे स्लोप कम है, बट स्टिल वहां पे रेनफॉल भी ज्यादा रहना चाहिए. ठीक है, सो सी एंड डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट यू हैव टू अप्लाई सम लॉजिक and accordingly compartmental bunding would be the right option here. Okay, now in which of the following conditions is a contour stone wall more appropriately used? कहाँ पे contour stone wall हम लोग यूज करते हैं, under which conditions? Yes.
It is B. It is used on slopes greater than 15% but less than 30% with shallow and gravelly soils. एंड जहाँ पे भी स्लोप्स लेस देन 30% है, वेयर बेंच टेरेसिंग इज नॉट फिजिबल, वहां पे भी हम लोग कॉन्टूर स्टोन वॉल यूज कर सकते हैं. ये बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट है. सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर. Next, which of the following statements best describes the suitability and purpose of contour trenching? Yes, contour trenching कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं? दिख रहा है आपको? Yes, yes, it is suitable for land with slope greater than 33.3%, where trenches of these 2 by 1 by 1 are excavated along the contours. Moving on to our next question, which of the following statements best describes the purpose and benefits of random tide ridging? ये भी हमने दो दो फोटोस मैंने लगा के दिखाया था. आपको ऑप्शंस तो दिख रहे हैं ना? ट्राई कोई प्रॉब्लम नहीं है. What happened? Why others are not answering? Try कीजिए. I'll give you more time if you want. 5 more minutes. जल्दी जल्दी. But again, fast. Okay. Here in this case, it is a water conservation technique where ridges are tied at shorter intervals. Thereby एक channel type का create करते हैं so that water can be harvested in those channels and that can be used by the plants which are growing on the ridges. Okay. So this will aid in, इससे क्या होगा जब वो चैनल में पानी चला जाएगा, दैट विल हेल्प इन सॉइल इनफिल्ट्रेशन, क्योंकि वो टाइम ज़्यादा मिलेगा. सो विदाउट वेस्टिंग, क्योंकि रेड सॉइल्स में क्या है, पूलिंग होता है. ये जनरली रेड सॉइल्स एंड ब्लैक सॉइल्स में बहुत यूजफुल है. ब्लैक सॉइल से ज़्यादा रेड सॉइल्स में ज़्यादा यूजफुल है इनफैक्ट. ओके. सो वहाँ पे वो चैनल्स की वजह से जो इस तरह से घूमते घूमते जाते हैं डायरेक्ट पूरा, दैट विल हेल्प a lot in conserving the water, giving more time for the water to get infiltrated. So this is the best option here. Which of the following is a key characteristic of basin listing as a soil and water conservation method? Yes. हमने ये भी देखा था बेसिन्स किस तरह से बनाते हैं बेसिन लिस्टर में, यूजिंग ए बेसिन लिस्टर. यस, ये जनरली क्ले सॉइल्स और ब्लैक सॉइल्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, जहाँ पे छोटे छोटे बेसिन्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिन लिस्टर. एंड ये जो बंड्स होते हैं इसमें बीच में वाटर दे कैन सेव so that can get more time for infiltration and the plants are grown on these ridges, thereby they can take up the water whatever that is being saved here. Yes, they are constructed across the slope to maximize the water infiltration, but especially heavy soils में ये use होता है. ठीक है. Now, which of the following statements best describes the function and effectiveness of percolation ponds? Percolation ponds भी हमने देखा था. Yes.
आपको दिख तो रहा है ना? यस। व्हाट हैपेंड? आंसर्स। परकोलेशन पॉन्ड्स। फोटो, फोटो याद कीजिए, बस इस तरह का था ना फोटो। Water would come into this, right? So these ponds are preferred to reduce the evaporation losses and facilitate groundwater recharge. Right? Groundwater recharge हो गया, बाकी यहाँ जितने भी plants है, crops है, that can be saved. They can utilize that water, right? Percolation ponds are shallow ponds designed to store rainwater, no doubt in that. But promote rapid evaporation? नहीं, इसके लिए तो नहीं होता है. These ponds are usually located on high altitude areas, no low altitude areas. तब जाके वो नीचे पानी आता है ना, low altitude areas होगा तो ही they'll be able to catch up that water to maximize runoff collection. So ये high altitude नहीं, low altitude areas. So ये भी wrong है. Percolation ponds have no impact beyond harmony. They will have, because ये percolation की वजह से even nearest जो wells है for that replenishment हो जाता है. So ये भी wrong है. The primary purpose of percolation ponds is to prevent water from seeping into the ground, ensuring surface water availability. No, surface availability water तो है ही, but again major इनका ये है कि for seeping into the ground, so that that would be utilized by the nearest plants, wells, etc. Okay, so थोड़ा सा options confusing terms दिए गए हैं, right? Yes, so ये हो गया. Next, which of the following statements best describes micro catchments in soil and water conservation? Micro catchments तरह तरह के हमने देखा है, circular, semicircular, V shaped and all that, right? Yes. Yes. Okay. Fast. Questions with timers आते हैं. I'll try to get those timers. उससे हमें थोड़ा सा एग्जाम के लिए भी तैयारी हो जाएगी, right? So here it is. C. Micro catchment store rainwater where it falls, aiding tree growth for by utilizing available interspace. ये जो माइक्रो कैचमेंट 5/5 with 20 mm rainfall, it can store 500 liters of water, not 50 liters. So ये wrong है. Yes. Which of the following is a key characteristic of farm ponds? Yes. फार्म पॉन्ड्स ये हमने किया था. यस. अदर्स. फार्म पॉन्ड्स कल हमने किया था. प्लेन एरियाज में भी किस तरह से होता है, इन द फील्ड्स एंड हिल एरियाज में किस तरह से होता है.
See, farm ponds, they can be created by either excavation or constructing an embankment across a waterway. Okay, they're primarily used to drain excess water from fields rather than storing it. No, they are for storing only. इसीलिए तो करते हैं, not to drain excess water. So, though draining of excess water is there from the fields, but storing के लिए, so बिल्कुल objective ही गलत, so wrong. Farm ponds are constructed only in hilly terrains where natural water flow is. I know plain areas में भी कर सकते हैं. Farm ponds require a minimum depth. No, 1.5 meters minimum depth. Okay, so ये भी गलत है. So this is true. They are designed to store only groundwater, not surface runoff. Actually, surface runoff ही store करते हैं, not groundwater. So this is also false. So D is the correct answer here. Okay, now which of the following statements about key line design is correct here? Yes. Yes. Answers. सी जब क्विजेस होंगे ना, आप अपने मार्क्स भी नोट डाउन कर लीजिए, डेली आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं एंड ऑल दैट. दैट विल आल्सो हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. नॉट टू डीमोटिवेट यू बट टू मोटिवेट यू ओनली. यस. अदर्स आंसर्स, मुझे दो ही आंसर्स मिले हैं. चलिए. ओके, देखिए. Key lines are randomly placed on sloping land. No, key lines, they are the enhanced contour lines, right? So ये तो नहीं है. They require mechanical pumps to distribute water to crops. No, no need. इसकी भी नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल नीचे ही आ जाते हैं. Accordingly, the plants through seepage infiltration, the plants can utilize that. The primary purpose of key line design is to drain excess water from the fields quickly. No, इसका तो है ही नहीं. मतलब जो बिल्कुल की लाइंस के बारे में आइडिया नहीं है उनको कंफ्यूज करने के लिए है ये ऑप्शंस, लेकिन हमने तो पढ़ लिया है. की लाइन डिजाइन इंक्रीजेस सॉइल इरोजन बाय कॉन्सेंट्रेटिंग वाटर फ्लो इन स्पेसिफिक एरियाज. ये भी नहीं है. Key line replaces the need for terracing while effectively managing water on slopes. This is very much true. Okay, so here E is the correct answer. Now, which of the following statements about wind breaks and shelter belts is correct? Yes. हमने देखा है ऑलरेडी विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेल्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, किस तरह से वो वर्क करते हैं. इसमें एक ही करेक्ट स्टेटमेंट है. Shelter belts are temporary structures whereas windbreaks are permanent. Completely opposite है ये. Not a true statement. A single row of trees is more effective than multiple rows in reducing wind speed. No, multiple rows से ज़्यादा effective रहता है, and that too at right angles, right? Wind breaks and shelter belts only protect against wind erosion and have no impact on moisture retention. No, जब wind blowing को कम करते हैं, ऑब्वियसली मॉइस्चर ड्राइंग, जो मॉइस्चर जो इवेपोरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, दैट कैन बी ब्रॉट डाउन. सो मॉइस्चर रिटेंशन भी होता है इनडायरेक्टली. सो ये भी गलत है. Wind breaks and shelter belts provide protection of up to 30 times the height of trees on the leeward side. एक और स्टेटमेंट देखिए. द प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स बाय शेल्टर बेल्ट्स इज लिमिटेड टू द हाइट ऑफ द ट्रीज एंड डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड इट. ईदर, दोनों में एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए.
एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट जहाँ पे लीवर्ड साइड है वहाँ पे यस 30 टाइम्स हाइट तक उसका इफेक्ट रहता है. सो दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स. Okay, so D is the correct answer here. Now, which of the following characteristics is not true about clay soils? हमने जब टेक्सचरल क्लासेस किए थे उसमें 3 टाइप्स ऑफ सॉइल्स वी हैव डन. क्ले सॉइल्स, लोमी सॉइल्स एंड सैंडी सॉइल्स, राइट? तो क्ले सॉइल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसमें दिए गए हैं. ये इजी है. आई डोंट थिंक आपको ये टफ लगेगा. इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें करना है. Others, speed up. Okay, see. Clay soils contain 50 to 100% clay and have poor drainage. Very much true. Clay soils tend to be heavy and difficult to work when dry. Very much true. Okay. Clay soils allow most water to infiltrate quickly due to their fine structure. Infiltration नहीं होता है. This is false. Okay. Because of their fine structure, micropore बहुत time लगता है. That's why it's called as clay soils or black soils, late soils, right? Clay soils can cause water to run off easily when wet. Yes, this is true. जब wet रहते हैं, completely saturated or something, they'll water बिल्कुल run off हो जाता है क्योंकि smooth surface हो जाता है ऊपर, so easily run off. Clay soils have high water retention but poor aeration. This is also very much true. So जो भी not true है मतलब this is not true. So here C is the correct answer here. Okay. Moving on to our next question. Which of the following statements about soil texture determination is incorrect? Incorrect. See, soil texture can be determined using the quantitative and qualitative methods. Yes, this is very much true. The texture by feel method is qualitative method. Yes, this is also very much true. The hydrometer method is based on the Stokes law and is used for quantitative purpose. This is also very much true. Soil texture classification is based on the physical properties, not chemical composition. So this is false. So hence D is the answer. Moving on to our next question. Which of the following statements regarding soil properties is incorrect? Soil properties, incorrect.
Answers, others? Okay. Here the correct answer is incorrect. Clay soil is highly suitable for tillage immediately after rainfall due to its structure. No, बहुत दिक्कत होती है clay soil में बारिश होने के बाद टिलेज करना. इसलिए जहाँ पे भी clay soils या heavy soils होते हैं, farmers tend to go for ploughing or tillage operations prior to the rainfall. So here D is the correct answer because this statement is incorrect. Which of the following statements about soil structure is incorrect? ये भी इजी है. Yes. Yes, it is C. Yes, all of you are right. Soil structure, it has an impact on the root growth or germination of crops. इसलिए हमें structure important है. The crumbly structure जो चाहिए, right? So here C is the correct answer. Next, which of the following statements is correct regarding soil aggregates? Soil aggregates, soil pads हमने पढ़ा है ना, उसी के ऊपर है. That is also important when it comes to understanding the soil structure. Correct statement. Yes. Which of the following statements is correct? Let's have a look. Stable aggregates are those that resist breakdown by external forces like water and wind. Yes, this is true because they resist unstable aggregates, they break down. Clods and fragments are naturally occurring soil aggregates that provide permanent pore space for air and water exchange. Clods and fragments are artificially occurring soil aggregates because of tillage and other factors they are created. So ये false statement है. Soil beds are artificial, these are naturally formed structures. Soil aggregates do not influence, they influence the air and water retention in soil aggregates. More the aggregates, बड़े है या फिर they'll have an impact on the soil growth. Class refers to shape, form and arrangement pattern of soil beds. No. So here A is the correct answer because it is a correct statement. Rest all are wrong statements. Now, coming to the next question, which of the following soil structure types is most commonly found in arid climates and is characterized by vertical columns of soil with a salt cap at the top? हमने फोटोज भी देखे थे इसके. एरिड क्लाइमेट में
because of that dry climate, cracks occur in the soil. Because of that cracks, generally these soils जो structure है that would be columnar, and because of the dry nature उसके ऊपर salt का cap भी रहेगा. So here the correct answer is columnar. ठीक है. Now, which of the following statements regarding bulk density is incorrect? Yes. Yes. See, here it is. The addition of organic matter decreases the bulk density, making it soil denser, not increases. So here D is the correct answer. Okay. Sorry, incorrect statement. बाकी सब correct statements है. Moving on to our last question for today. Which of the following factors does not directly influence the particle density of soil? There are various factors that influence the particle density of soil. यस, यहाँ पे अगर बल्क डेंसिटी दिया होता, ओके, सॉरी, बल्क डेंसिटी में पोर स्पेस हैज एन इफेक्ट, ओके, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, बट पार्टिकल डेंसिटी पोर स्पेस नहीं करता, बिकॉज वी आर नॉट लुकिंग इनटू दैट व्हेन वी आर काउंटिंग द व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द पार्टिकल डेंसिटी. सो हियर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो ये हो गया हमारा आज का. I know you must be having another class. Yes. So, how did you find today's session? And if you have any queries, questions, or any suggestions, any advices, anything, comments on today's session, all are welcome. If not, I'll wind up the session. आज भी ज़्यादा टाइम हो गया. मेरे क्लासेस थोड़े से ऐसे रहते हैं बिकॉज लास्ट में क्वेश्चंस ये सब कवर करना भी ज़रूरी है. थैंक यू निंगनैंग. एक्चुअली पता नहीं क्यों मुझे सैटरडे लग रहा है थर्सडे. ठीक है, we'll meet tomorrow then, and okay, we'll try to wind up the soils, but I think कल भी नहीं हो पाएगा.
विल सी, और एल्स या फिर कुछ और स्ट्रैटेजी हमें करना पड़ेगा सो दैट कंटेंट भी ज़्यादा कवरेज हो, या फिर पहले इसका कंटेंट का सेशन हो, थोड़ा लेट नाइट में एक आधे घंटे का एमसीक्यूज वाला सेशन हो उस तरह से, सो दैट ये एमसीक्यूज में जो टाइम जा रहा है हमारा डिस्कशन में, कि देखिए एमसीक्यूज ऑल्सो आई कैन गिव इट टू यू, आप खुद कर सकते हो, लेकिन ये अप्लाइड वाले क्वेश्चंस में ना यू नीड टू हैव डिस्कशन, जब डिस्कशन होगा तो दैट विल बिल्कुल माइंड में प्रिंट हो जाता है, and it will be very easy for it will improve your recall nature also, जो रिकॉल वैल्यू होता है रिटेंशन वाला, वो आपका बहुत हाई रहेगा अगर हम लोग अप्लाइड वाले क्वेश्चन स्पेशली डिस्कस करके करेंगे तो, इसीलिए मैं इसमें करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, सो विल ट्री सी, कुछ तो स्ट्रैटेजी करेंगे, दिस अभी तो स्टार्टिंग ही है। Okay, so I'm winding up the session since I'm not getting any queries as such. रिकॉर्डेड वीडियो मुन्नी आपको सौरभ सर से बात करनी पड़ेगी, पीडीएफ्स आई विल गिव, वो कल मैंने दिया नहीं था बिकॉज उसको सेग्रीगेट करने में मैं भूल गई थी, मॉर्निंग ही याद आया, आफ्टरनून में याद आया था मुझे, सो अभी पीडीएफ्स में दे देती हूँ या फिर मैंने दे दिया है आफ्टरनून में, लेट मी सी, नहीं नहीं दिया, ड्राफ्ट किया था मैंने बट आई डिडंट, सो पीडीएफ तो मैं दे दूंगी, बट वीडियोस के लिए यू हैव टू रीच आउट टू सौरभ सर। ओके, थैंक you very much once again, you have been again a very great audience with great response and all that, thank you very much, please take good care of yourself, bye bye, good night.